Dear students, I am Israel Haq, lecturer English, teaching you class 12th English Chanav 2nd. Come to page number 80. We are studying the poem After Apple Picking by Robert Frost, and we have already completed most of the comprehension section. Discussion part 2, and today we are on discussion part 2, question number 4. You see what it asks. Why has the word thousand been repeated twice? What is the poetic device used here? Why has it been used? तो आपसे पूछा जा रहा है Why has the word thousand been repeated? तो एक जगह आपको पोएम में कहा जाता है thousand एप्पल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये, आप देख सकते हैं There were, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये There were 10,000 fruits to touch Egyptian hand, lift down and not let fall. ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि असल में 10,000 this is alliteration and also repetition technique, literary device used here. तो यहाँ पे असल में पॉइंट का मतलब क्या है, वो 10,000 का मतलब है हज़ारों लाखों सेब हैं, मतलब है एक भरपूर फसल है, इसका यही मतलब है यहाँ पर. तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आपके लिए क्या हमने बनाया है. तो आप देखिए द आंसर हेयर that I prepared for you is the word thousand is repeated to convey the message of a heavy apple crop. इसको thousand इसलिए रिपीट किया गया है ताकि ये इससे ये समझ आए कि एक बहुत ही अच्छी क्रॉप हुई है, हैवी क्रॉप हुई है, एप्पल क्रॉप. दे आर न्यूमरस, बहुत ज़्यादा एप्पल्स हैं, एंड पुटिंग हैवी प्रेशर ऑन वर्क ऑन द एप्पल पिकर. तो दे आर पुटिंग हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ज़्यादा फसल होने की वजह से एप्पल पिकर पर, पॉइंट पर. द पॉइंट हेयर uses the device of alliteration and repetition. तो जो यहाँ पर literary device use हुआ, that is called alliteration, means use of consonant sounds in the beginning of words. Use of consonant sounds in the beginning of words, उसे हम alliteration कहते हैं. और अगर use of vowel sounds हो, repeat हो, तो उसे हम assonance कहते हैं literary device में. तो ये देख सकते हैं आप why it uses to bring म्यूज़िकल इफ़ेक्ट, और इसको पोएम में को म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए ये यूज़ किया गया है इन द वर्स लाइन. तो इस तरह एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम बनती, क्योंकि आपको पहले भी ये बताया गया है पोइट्री मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स इन ब्यूटीफुल ऑर्डर. तो प्रोज को हम ये कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर. तो लेकिन पोइट्री में वर्ड्स भी ब्यूटीफुल होने चाहिए, ऑर्डर भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, इसमें एक मेट्रिकल क्या नाम है अरेंजमेंट होनी चाहिए, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ पोएम. तो गीत तभी बनता है. तो यहाँ पर यही इसका मीनिंग है. तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट आस्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव हियर. What does apple picker refer to? What does apple picking refer to? What does apple picking refer to? Why has the poet given the poem this title? यहाँ पर इस जो एप्पल पिकिंग है इसका क्या कुछ और मतलब भी है इस टाइटल का, तो यही टाइटल क्यों दिया गया है इस पोएम को. तो हम देखते हैं हमने क्या समझा है. लेट अस सी द आंसर फॉर इट. एप्पल पिकिंग इज़ ए हार्ड वर्किंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. हम जानते हैं एक बहुत ही मुश्किल काम है ये, हार्ड वर्क इसमें ज़रूरत है. इट इज़ द हार्वेस्टिंग ऑफ एप्पल क्रॉप. इसका मतलब क्या है, जब सेब तैयार हो जाते हैं तो फिर इनको उतारना पड़ता है और बहुत मेहनत से उतारना पड़ता है. बट सिम्बॉलिकली इट रेफर्स टू ह्यूमन हार्ड वर्क. तो लेकिन इसका यहाँ पर अगर सिम्बॉलिकल मीनिंग देखें हम कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एप्पल पिकिंग ही रिप्रेजेंट नहीं करता, ये काम कुछ और भी, ये इंसान की ज़िंदगी की मेहनत को दिखाता है. ह्यूमन हार्ड वर्क टू रीच वंस डेस्टिनेशन. तो अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आदमी की जद्दोजहद को भी ये सिम्बलाइज़ करता है. इट रेफर्स टू द रिजॉइस एंड कंटेंटमेंट आफ्टर सम फ्रूटफुल अचीवमेंट.
تو یہاں پر یہ بھی اس کا مطلب نکلتا ہے کہ جب آدمی کوئی بڑا کام کرتا ہے، کوئی اچیومنٹ اسے ملتی ہے، زندگی میں کچھ حاصل ہوتا ہے، تو اسے ایک کنٹینٹمنٹ حاصل ہوتی ہے، اسے ایک تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، تو وہ خوشی مناتا ہے. The poet has given this title to the poem so as to make the reader understand the poem easily. تو صرف ایپل پکنگ کو ٹائٹل اس لیے بنایا گیا ہے اور اسی ٹاپک کو لیا گیا ہے تاکہ ایک ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے، اور یہ کام تقریباً دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی آرام سے اسے سمجھ سکتا ہے. ایپل پکنگ نہ صحیح، اٹ میں بی واٹ یو سے دس، کیا نام ہے، آم کی فصل ہم توڑتے ہیں تب بھی یہی محنت ضرورت ہوتی ہے، چیری کی فصل ہم توڑتے ہیں تب بھی یہی محنت ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آلسو infer the meaning of symbolism hidden in between the lines. تو اس ایپل پکنگ کے تھرو وہ میننگ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو لائنوں کے بیچ میں رائٹر نے پھنسا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، سمبلائز کرتا ہے. A good harvest is always expected after hard work. ہمیشہ آدمی جب بہت محنت کرتا ہے تو اسے ایک اچھے نتیجے کی تمنا ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے. And it brings a good sleep as well. اور جب آدمی اپنا کام پورا کر لیتا ہے محنت کے بعد تو اسے ایک اچھی نیند بھی آتی ہے. تو اس طرح یہ پوئم صرف ایک ایپل پکر کی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کی ایکسپیرینس ہے، اور زندگی کے سفر میں جو مشکلات ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، جو ہارڈ ورکس ہیں، ان سب کو یہ سمبلائز کرتی ہے، سب کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. سو اٹس اے بیوٹیفل پوئم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینڈ وی ہیو کمپلیٹڈ ہیئر the question section, and it will be followed by the discussion 3, reference to context. It will be next.